Hello friends, welcome to Inspire Education. So this is our second session on the technical indicators that we have started. The second indicator that would be taking is the moving average convergence divergence, जिसको अपन MACD भी बोलते हैं. So MACD is an acronym और इसका full form है moving average convergence divergence. Let's see what is moving average convergence divergence. See, and it is a technical analysis indicator which was created by Mr. Gerald Apple in the later 1970s and is used to spot changes in the strength of the underlying asset or the stock, we can say, the direction of the underlying asset, the momentum, and the duration of the trend in a stock's price. The trend may be an uptrend or a downtrend, कुछ भी हो सकता है. Now what is MACD और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? सो MACD टर्न्स मूविंग एवरेजेस इनटू अ मोमेंटम ऑक्सीलेटर. सी, मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स हैं जो कि क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके निकाले जाते हैं. एंड मोमेंटम ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं? जो मार्केट के मोमेंट को पकड़ते हैं, मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं. तो MACD मूविंग एवरेजेस को ही मिला के एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर में कन्वर्ट करता है. कैसे? इट सब्सट्रैक्ट्स द लोअर मूविंग एवरेज फ्रॉम द शॉर्टर मूविंग एवरेज. दो मूविंग एवरेजेस लिए जाते हैं, सपोज 12 डे मूविंग एवरेज एंड 26 डे मूविंग एवरेज, एंड the longer moving average, that is the 26-day moving average, is subtracted from the shorter moving average, that is the 12-day moving average. So 12-day moving average minus 26-day moving average. As a result, it offers the best of both the worlds. That is, moving average है तो lagging होगा ही, because it use क्या कर रहा है? The basic जो इनपुट है वो मूविंग एवरेजेस है, एंड मूविंग एवरेज इन देमसेल्व्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स. तो लैग तो इसमें आएगा. सो दिस इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, बट इट गिव्स द मोमेंटम ऑफ द मार्केट एज वेल. इट फ्लक्चुएट्स अबव एंड बिलो द जीरो लाइन. एक जीरो लाइन रहती है इंडिकेटर में, अपन आगे चार्ट में देखेंगे. एज द मूविंग एवरेज कन्वर्ज, क्रॉस एंड डाइवर्ज. जीरो लाइन से ऊपर नीचे जब मूविंग एवरेज आता है तो उसको कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या क्रॉसिंग बोला जाता है. एंड ट्रेडर्स कैन लुक फॉर सिग्नल लाइन क्रॉसओवर, दिस सिग्नल लाइन क्रॉसओवर ऑल्सो, then a central line crossover and divergences to generate signals. All the three terms we'll see in details ahead. So let's move on. First of all, see, now the formula for the MACD is generally 12, 26, 9. जनरली 9, 24, 9 का भी यूज़ होता है. अपन ने जो चार्ट्स में यूज़ किए हैं वो 9, 24, 9 है, बट मोस्ट ऑफ द चार्टिंग सॉफ्टवेयर कम्स विद द डिफॉल्ट फॉर्मूला ऑफ 12, 26, 9. Here 12 is the shorter period moving average, 26 is the longer period moving average, and 9 is again a shorter period moving average. MACD लाइन कैसे निकाली जाती है? It is the difference between the 12-day exponential moving average and a 26-day exponential moving average. और अगर मैं by default अगर फॉर्मूला बोलना चाहूँ तो I can say the difference between the shorter period moving average and the longer period moving average. Here the shorter one is 12, that's why I've written it 12 here, and the longer one is 26. And then a 9-day exponential moving average of the MACD का ही 9-day exponential moving average superimpose किया जाता है इस MACD पे to act as a signal line. ये 9-day moving average जो है, जो MACD का है, this acts as a signal line. Then MACD crossover signals. See, MACD में तीन तरीके के सिग्नल्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट है क्रॉसओवर सिग्नल, सेकंड इज सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर, एंड थर्ड इज डाइवर्जेंसेस. The MACD indicator reduces the lag inherent in using the moving averages alone. Then a buy signal is generated जब MACD crosses above the signal line. मतलब जो MACD अपन ने ड्रॉ की है वो जब 9-day EMA से को ऊपर की तरफ काटेगी तो दैट्स अ बाय सिग्नल.
and a sell signal is generated when the MACD crosses below the signal line, जो 9-day exponential moving average को नीचे की तरफ काटेगी. When it crosses below the signal line, then it's a sell signal. Now let's see it on the chart. See, now here if we see this is the MACD plotted and MACD and signal line which is plotted. This line which we see, the horizontal one, is the zero line. ये center line है, ठीक है. Now green line that we see is the MACD. It is the difference between 9 and 24 मूविंग एवरेज का डिफरेंस है. मतलब अगर मैं यहाँ 9 और 24 का मूविंग एवरेज प्लॉट कर दूँ तो उनकी वैल्यूज़ में जितना डिफरेंस आएगा ये यहाँ पे प्लॉट हो रहा है. एंड द पर्पल लाइन दैट वी सी इज द एवरेज ऑफ द ग्रीन लाइन. ये जो पर्पल लाइन अपन देख रहे हैं, दिस इज द एवरेज ऑफ दिस MACD लाइन. नाउ मूविंग MACD क्रॉसओवर्स, मतलब ये दो लाइंस जब अपने आप में क्रॉस करती हैं तो सिग्नल्स आर जनरेटेड. सी, व्हेन द ग्रीन लाइन इज क्रॉसिंग अबव द पर्पल लाइन, देन अ बाय सिग्नल इज जनरेटेड. सी ऑन द चार्ट, a buy signal is generated. Similarly, when the purple line crosses above the green line, then a sell signal is generated. This is the sell signal. That means when the MACD crosses above the signal line, so that indicates bullish trend, the stock is going on an uptrend. And when the MACD crosses below the signal line, then a downtrend is signified or a bearish signal is generated. See, here a bearish signal is being generated. The center line is also used as a reference to measure the stock. Now I'll repeat. This green line is the MACD line. This purple line is the average line, that is 9-day exponential moving average line. This MACD line is formed by subtracting the 9-day moving average from the 24-day moving average. इनके क्रॉसओवर से सिग्नल्स जनरेट होते हैं. जब MACD इसको ऊपर की तरफ काटता है तो दिस इज अ बाय सिग्नल. See, we'll see it here also. When MACD cuts the purple line upwards, it's a buy signal, and when it cuts it downwards, it's a sell signal. So the n number of buy and sell signals which are generated on this chart through. So this was MACD crossover signals. Then we come on to MACD center line crossovers. Talking about center line crossover generates signals of market sentiment and can guide or confirm the MACD crossovers. These solely ये अकेले नहीं यूज किए जा सकते हैं सिग्नल्स देने के लिए, बट कैन बी यूज्ड इन consultation to the MACD crossovers. When the fast line crosses below the center line, it is an indication of a bearish phase. मतलब जब MACD line center line से नीचे की तरफ जाएगी तो this is an indication of the bearish phase of the market. And when the fast line crosses the center line going upwards, it is an indication that the market is switching from a bear to a bull sentiment. मतलब market is going to reverse its bearish trend into a bullish trend. We'll see it on the chart. See, whenever this fast line crosses above the center line, this is the center line which is taken as reference to generate buy and sell signals. देखिए यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ काटा इस सेंटर लाइन को, दिस इज अ बाय सिग्नल विच इज जनरेटेड, एंड नीचे की तरफ काटा, इट वेंट बिलो द जीरो लाइन, so here it is a sell signal which is generated. Whenever the stock is or the MACD is above the zero line, that means the smaller moving average is moving above the longer term moving average, and whenever the stock is below the MACD is below the zero line, that means the longer term moving average may be, in this case it is a 24-day moving average is above the 9-day moving average, and when it is
when it crossing above the zero line, that means the 9-day moving average is above the 24-day moving average. So in this way we can justify the center line crossovers also. Moving ahead, the third type of signals that can be generated are MACD divergences. To spot divergences, one look at the MACD lines and the price lines simultaneously. Negative or bearish divergences, see, it is usually a signal of market top when the prices make new highs. ये अब मार्केट टॉप का सिग्नल है कि अब मार्केट टॉप लेवल्स पे आ चुका है, जब प्राइसेस हाई बना रहा है, लेकिन MACD इंडिकेटर्स डज नॉट मैच इट्स प्रीवियस हाई. MACD नीचे आ रहा है और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जबकि ideally क्या होना चाहिए, as the prices move upwards the moving average should move upwards, and that's why the MACD also should move upwards. So here it's a whipsaw which is coming into scene. So the chance that there will be a market top is even greater if the MACD is well above the zero line or shows a overbought tendency, and a positive or bullish divergence occurs is in just reverse conditions. The MACD indicators is well above the zero line and begin making new highs. At the same time the price continues declining. So this is usually an early signal of a market bottom. ये market bottoms को signify करता है. So this was all about MACD, moving average convergence, divergence. I hope I have made myself clear. If you have any queries, you can log on to www.inspireeducation.in. Thank you so much.